tech talent acquisition. So we will start with some introduction. थोड़ा सा अपने speaker का आज. Ms. Kanwal has worked with different and very like big names like ITC, Creative Chaos, Inmay, and right now she's working at Datix AI as head of talent acquisition, people success and management and culture excellence. Thank you so much, Ms. Kanwal, for joining us. Um, we will start right off. हम लोग चाहते हैं कि of course ये जितना maximum हम लोग concerns address कर सकते हैं और questions answer कर सकते हैं लोगों के लिए, that we do that. So our first question would be, um, although question बहुत simple है, लेकिन लोग इसके अंदर differentiate करना जो है ना, I think भूल जाते हैं. Talent acquisition or recruitment. What's the difference here? डिफरेंस ऐसे ही जैसे जमीन और आसमान का. So I think if I would like to explain further about it, recruitment initially when it started with this concept कि जी हमें organization में recruitment करनी है, तो recruitment was basically started with the industrial sector first. और उस recruitment के अंदर ज़्यादातर जो positions हम fulfill कर रहे होते थे वो आप समझ लो haphazard basis के ऊपर कर रहे होते थे, जिसमें industrial staff was one of the very important people which we used to hire in terms of recruitment. अच्छा, recruitment अब चूंकि अगर हम specifically बात करें talent acquisition की, तो what is a paradigm shift between recruitment and talent acquisition? I would like to mention that because whenever I talk to my team and whenever I would like to emphasize on this concept कि जी अब आप लोगों को अपने आप को recruiters कहना छोड़ दें और recruitment की terminology को change करके talent acquisition partner के concept के ऊपर आएं. So why I'm saying it, because I have been through with this process. I've been a recruitment manager at first when I started my job in IT sector way back in 12, I mean probably 12 years back. मैंने जो ऑब्जर्व किया और मैंने जो लर्न किया और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, दैट इज कि अब हम जो कर रहे हैं टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज नॉट जस्ट द रिक्रूटमेंट. एंड अगर आप लोग ये सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हूसोएवर इज लिसनिंग टू मी, देन आई थिंक यू आर डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप लोगों को अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है, आप लोगों को अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है, because talent acquisition partner has to think from the business perspective as well. आप सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करते और आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट ही करते रहेंगे तो आप सारी जिंदगी रिक्रूटर ही रह जाएंगे. सो आई थिंक हमने जो अपनी लास्ट सर्टिफिकेशन के अंदर फोकस किया, वो फोकस भी हमारा इसी चीज के ऊपर था कि सबसे पहले आप अपने आप को रिक्रूटर या recruitment executive कहना खत्म करें, and you have to think from the perspective of the business side as well. Why I'm saying it कि अब आप talent acquisition partner अपने आप को consider करें, because रिक्रूटमेंट करना या पोजीशन को फिल करना इज सेकेंडरी थिंग. उससे पहले जितनी बैकएंड पे होमवर्क करना होता है, जितने बैकएंड पे आपको अपना जो है अपनी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क. और उस स्ट्रेटेजिक वर्क के लिए आपको मैन पावर प्लान भी बनाना बहुत जरूरी है, विच पीपल डोंट नो हाउ टू मेक इट जर्नली इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज. आपका जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा एज एन HR, एज अ टैलेंट एक्विजिशन और एज अ रिक्रूटर, तब तक you would not be able to retain people for a longer period of time as well. Secondly, why I would like to focus more on talent acquisition side as well, because आप ही हैं वो लोग जिन्होंने लोगों को आगे डेवलप भी करना है, आप ही हैं वो लोग जिन्होंने आगे उनकी कैरियर प्रोग्रेशन की मैपिंग भी करनी है, आप ही हैं वो लोग. इफ आई एम श्योर हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम हियर इन टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट साइड, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने उनको उनके कैरियर पाथ सेट करने हैं. व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज आप ही वो लोग हैं जो उनके फ्रॉम द डे वन रिक्रूटमेंट जर्नी से लेकर उनकी ऑन बोर्डिंग तक उनके साथ होते हैं. So you people know what are their strengths, you people know what are their areas of improvement, you people know where they are, lagging behind in terms of the personality assessments. So it comes a lot of things in talent acquisition which never comes in recruitment side. So recruitment is just basic to fill the position, but to fill the position और उससे पहले का homework, and of course to retain them, it requires a lot of more energy and a lot of more strategic work, in my opinion, in my experience. So that's the major difference. Thank you so much.
डेफिनेटली ये मिसकंसेप्शन तो हम लोगों का क्लियर हो गया है और डिफरेंस भी हम लोगों को पता चल गया है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब राइट नाउ ऑफ कोर्स हम वी रिलाई ऑन लिंक्डइन अ लॉट अपनी पोजीशंस फिल करने के लिए, ये टैलेंट एक्विजिशन के साथ हमें हेल्प करने के लिए। How do we utilize our own LinkedIn profile to source candidates? How does that help us there? अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप जब तक जो है ना लिंक्डइन पे कोई 10 12 15 हज़ार रुपया खर्च नहीं कर लोगे, आप पोजीशंस को हायर नहीं कर सकते। आई वुड लाइक टू गिव वन वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। सिंस वेयर आई एम वर्किंग एट द मोमेंट 1.5 year, मैंने एक भी लिंक्डइन पे रिक्रूटमेंट का पेड ऐड नहीं लिया, एक भी। और मैंने अपनी 40 की 40 पोजीशंस विदाउट हैविंग द पेड पेड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम लिंक्डइन फिल किए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आई एम जस्ट डिग्रेडिंग लिंक्डइन और एनी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको खुद एज अ रिसोर्स, एज अ टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर मार्केट में इतना एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको रिसोर्स, आपको हर सॉफ्टवेयर हाउस के मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे। और व्हाई आई एम सेइंग इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप जब किसी को किसी जॉब बोर्ड पर कोई जॉब पोस्ट प्लेस करते हो, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन, बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं विच आर पैसिव्स एंड दे आर गुड टैलेंट फॉर अस एज वेल। तो वो शायद आपको उस वक्त अप्लाई ना करे, लेकिन अगर आपके लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रेजेंस नहीं है एज अ रिसोर्स, तो नथिंग विल वर्क फॉर यू। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका अपने जो ब्रांड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो कितना स्ट्रांग है। आप कितने भी अपने एज अ पर्सनल रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाओ, यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स एज वेल, बट उस वक्त तक ये चीज काम नहीं करेगी तब तक जब तक आपके एक और स्टेक होल्डर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले नहीं करेंगे, एंड दैट इज टू बिल्ड द ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। एंड आपके लिए या हम सब के लिए, whosoever is doing the talent acquisition, is very important to continuously reaching out to the passive resources as well, right? आप कितने active हो, आप it's just not your profile. There are multiple other groups which are active on the LinkedIn, like IT and recruitment. आपकी जो industry है उससे related multiple groups के अंदर you must have an active subscription or active participation in that as well. And you just not use that they're free classified job posting. You can use those platforms to increase your reach and to ensure that you've been reaching out your job post into those other platforms as well. So one, yes, to be active on LinkedIn is very important, but to be active as a layman, nothing works for you. So what is important for you is here that you've been active on the LinkedIn with the right mindset and with the right people to whom you're targeting to. Thank you. In fact, अच्छा आपने thank आपका जो circle है with the people whosoever is your competitors in the industry doesn't matter. So for example, if I'm working for Data Systems Limited हो गया, Devzing हो गया, multiple people are on my platform in tech industry. What happens is that, for example, if I need to ask from and I need to request from people that I need .NET developers, so that resource in the HR sitting in some another company could help me out and could pull certain profiles from me, which I couldn't able to do that. So we have to ensure that we must be very much active in terms of reaching out to the right people, and to ensure that we have a lot of HR people in tech industry on our connections and our reaching out as well. so networking basically important है बहुत Very ज़्यादा। important. Very जी। important. Yeah. इसमें आपने एक पॉइंट पे डिस्कस की एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। सो टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर के लिए मतलब वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट देयर जॉब? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है मरियम, के टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की नहीं है टू रीच टू ब्रिंग एंड टू अट्रैक्ट द राइट टैलेंट। There are multiple other stakeholders which are involved in this whole funnel, right? So इस funnel के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है, which is of your marketing and creative team. अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रही, या वो मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं कर रही विच आर इम्पॉर्टेंट
to reach to the right talent, I think talent acquisition team would not do any wonders alone, right? Number one. Okay, number two, जब ये सब कुछ आपकी organization में हो रहा है, in terms of marketing, in terms of building up your, brand as an organization as a best employer of the choice, आपका काम क्या है कि आपने वो कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जिससे विच कुड स्प्रेड एज अ वर्ड ऑफ माउथ, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने डॉट नेट के डेवलपर्स को हायर करना है, आपने जॉब पोस्ट की, वंडरफुल, आपने स्क्रीनिंग की, वंडरफुल, आपने टेक्निकल इंटरव्यू किया, वंडरफुल, आपने उस रिसोर्स का एचओडी का इंटरव्यू करवाया, सेकंड पैनल पे उसको लेकर गए, दैट्स वंडरफुल, आपने उसका फाइनल इंटरव्यू करवाया, दैट्स अगेन वंडरफुल। लेकिन अगर उस फाइनल इंटरव्यू के बाद आपने उसको अकेला छोड़ दिया और आपने उसको ये नहीं बताया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट रिसोर्स, ट्रस्ट मी, ही विल नॉट से एनीथिंग गुड अबाउट यू, राइट? देखिए, failures and successes are always there for the resources and prospect. That happened with me as well, that happened with Saeed as well, that happened with you as well. The only difference between one organization to another organization is that how good and how courteously you close the channel as well. So अगर आपने उसको एक थैंक यू के मैसेज कर दिया and you said it, thank you very much for all your efforts, and probably this time you would not be able we would not be able to match with your profile. Next time, good luck to your future talent hunt, I mean your recruitment hunt. So I think that's one closing message or email from your side would make a lot of difference in that particular aspect, and that gives the impression of that candidate that your roots of the organization are very strong. So I think the candidate experience part is of course the responsibility of the talent acquisition partners in the HR department, and then to build it from there onwards is again, it requires a lot of homework, which probably we're gonna cover in upcoming certifications as well. ठीक। अच्छा, इसमें व्हेन वी टॉक्ड अबाउट आवर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑफ कोर्स लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बाय रिक्रूटर्स फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस। ऑल्सो सोशल मीडिया के और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वी यूज फॉर दिस पर्पस, जॉब बोर्ड्स हैं काफ़ी सारे। हाउ कैन वी यूज देम टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम? अच्छा, ये जो मल्टीपल जॉब बोर्ड्स के अंदर गुम जाना ना, ये भी अच्छी चीज नहीं है. वी नीड टू नो वेयर द टारगेट ऑडियंस वी वुड बी एबल टू फाइंड. जैसे मैंने अपनी टेक्निकल पोजीशंस को हायर करना है तो 1 साल हो गया. आई हैवंट यूज्ड एनी अदर प्लेटफॉर्म until unless I need something out of the technical industry from other than LinkedIn, right? So I'm lucky enough, or probably my reach or my target audience are been built in such a way, parallel um, with my brand of the organization, that shayad we are now at after 1.5 year we would be able to fetch people very easily in terms of the mid to senior level or mid to junior level resources as well. The only point here is that आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म से आपको कौन से रिसोर्सेज मिलना ज्यादा बेहतर तौर पे आपको नजर आएंगे. To have multiple options is always good. For example, many people work through WhatsApp as well. Many people work through word of mouth, like referrals. There are multiple other channels as well. The only point is that आप multiple platforms के ऊपर अपनी post को डालने का would just take your energies. Nothing serve you. To be targeted, to know where your niche is more important for me, and that's what I recommend to all my talent acquisition partners, whosoever is listening me out there. थैंक यू। आप में से अगर किसी का माइक म्यूट नहीं है तो प्लीज उसको म्यूट कर लें, थोड़ी सी आवाज आ रही है। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो कि वी टॉक अबाउट एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स. How important are they when you're talking about talent acquisition, and whether we should, like, does a normal manual system work या आपको automated की तरफ ही जाना चाहिए? अच्छा मरियम, when I started my journey back in like probably 14 years back, तो शायद ये Excel वगैरह would help us a lot. देखें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, if your organization is not ready to spend a single penny on bringing the ATS, सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है. ATS होता क्या है? Applicant tracking system, right? So what ATS do? ATS gives you the information after probably 6 months or 1 year or so that somebody XYZ came to your organization, been interviewed for such position, and these were the remarks, for certain position on certain candidate. That's it, right? अच्छा, ये काम पहले एक्सेल में भी होता था और बहुत अच्छा होता था, और अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सेल का जो फॉर्मेट है इन टर्म्स ऑफ एटीएस यूज हो रहा है. लेकिन
time changes, technology is changing, and being into such a competitive environment, I always recommend to have certain software, a certain system which help you in retaining that information for a longer period of time, right? Whenever you need it. So there are multiple tracking systems are available in house, in organization. If we are working in tech industry, we can build our own in house as well. That's not an issue, right? But if we can't build in house, we can always buy from the open source or any other cheaper area from where we can buy it. Now, the need to understand is that the purpose of the applicant tracking system is to retain that information, that record, that जैसे हम अपना employee record बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? To ensure that we have everything intact of that employee whenever he joins us and whenever he leaves us, right? So it's in the same manner, applicant tracking system would help us, of course, to have that information ready to use whenever we need it. It will help us to hunt the resources when we don't need them now, probably, but probably after 6 months, if somebody we need it and we need to pull out data into profiles quite urgently, or certain profiles are on hold, we need to take those profiles from there. So applicant tracking system is, I think, very important. We must have it. Doesn't matter if your organizations are not ready to spend at the moment on those softwares, it's okay. Start building the data on Excel. It's a wonderful tool as well. You can have even dashboards being maintained from there. You can do a lot of analytics from there as well. But if in case you can pitch that idea to your organization that we must have ATS, there are multiple options, and please use them. It will help you a lot and ease your lot of work and manual working as well. हमने बीच में बात की पैसिव कैंडिडेट्स की, ठीक है? सो थोड़ा सा हम लोगों की ऑडियंस के लिए इफ यू कुड काइंडली एलैबोरेट कितना ज़रूरी है पैसिव कैंडिडेट्स को रीच आउट करना एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? Acha, passive audience, first of all, passive candidates are very important for us, number one. Number two, हमारे केस में टेक्निकल इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो टॉप टैलेंट होता है ना हमारा, वो कभी भी नौकरी खुद ढूंढ नहीं रहा होता. उनको यू हैव टू पोच देम, राइट? और उनको पोच करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड कनेक्शन एंड गुड रिलेशनशिप्स विद देम एज वेल. सो फॉर एग्जांपल, in my connections there are, if I'm serving in the industry for IT for about 14 years, तो उसमें से 90% जो मेरे कनेक्शंस होंगे दे आर टेक्निकल कनेक्शंस, राइट? अच्छा, अब इसमें पैसिव होते क्या हैं? पैसिव वो लोग होते हैं जो शायद बहुत एक्टिवली जॉब हंट नहीं कर रहे होते, लेकिन इफ दिल कम अक्रॉस एनी गुड अपॉर्चुनिटी, दिल डेफिनेटली वुड लाइक टू फर्दर एक्सप्लोर इट, right? So these are the passive resources. And to pitch them is equally important to in comparison to those people who are actively looking as well. So आप जब भी एक असूल है which I always follow and I prefer and I always encourage my team to do that as well, कि आप passive resources को कभी भी job नहीं बेचते. You never have to sell the job to the passive people. You have to build the relationship with them first. By how? By introducing your company first and to have like chit chat off and on with them, that how is it going, how the work is going, any challenges if they are facing in terms of working on a daily basis. Either they are looking for a remote job or hybrid model work, and if your organization is offering hybrid and remote work, that's the point, that's the target, that's the spot where you have to hit, and you have to pitch that benefit which your organization is offering in comparison to where they're working currently. So these are little bit strategies which I work along with, and that's what I recommend to other whosoever is listening me out there as well. Acha, what do you think are some of the challenges that HR professionals, specifically talent acquisition partners, are facing in tech recruitment and like talent acquisition, especially in the sort of market situation that we have today? That's a very interesting question. I never thought of that question, by the way. चलो I try to वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करती हूँ मैं. अच्छा, इसका I think सबसे पहला चैलेंज मैं अपने अपने तरीके से बात करूंगी which I faced. So I probably assume that whosoever is listening, including Saeed and you, would be facing with the same challenges, right? So the first thing is there are too many vacancies. It's probably look a little sounding crazy to you people,
but that's the truth. There are so many vacancies in the IT industry at the moment. This is the biggest challenge for me to attract the people towards my organization, right? There are multiple छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस are opening at the moment, जो शायद आपको whatever your demand is, they're ready to pay you off without understanding you as a candidate, as a prospect, that probably they're going to hire you for a very small period of time, and then there could be a time where you would be not needing for that company and you're sitting free and idle, right? एंड द सेकंड चैलेंज विच आई फेस इज कि यही जो हमारा जो अभी हम बात कर रहे थे अपने पैसिव रिसोर्सेज की, पैसिव कैंडिडेट्स की, दे आर टॉप टैलेंट बट दे आर पैसिव. यू रियली हैव टू pitch yourself in terms as a sales agent, to build that rapport with them first and build the connections and relationship with them. And you don't, and unfortunately जो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, एंड दैट इज कि आप उनको अपनी जॉब बेच नहीं सकते, बिकॉज इफ यू स्टार्ट सेलिंग देम द जॉब, they're not going to be interested with you talking anymore, right? So that's another challenge which we are facing at the moment, जिसका इलाज मैंने आपको ये बताया, that you don't have to sell the post to them, you have to sell the company to them, right? And you have to pitch them the relationship which you build for a longer period of time, and you have to wait for that right time and right hit where you have to pitch that benefit to that person who could attract, to further explore the opportunities which your organization have. And then the very important factor which I believe I faced when I joined the IT industry is कि हम उनकी ज़बान नहीं जानते. The talent acquisition partners must know the language of technical people. So आप जब तक उनके साथ टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, आप उनके साथ even the screening calls which you do, you must have to ensure that you fully equipped with the knowledge of technical jargons, which technical industry usually follows and use in their normal language. So that's another one of the very major challenge which most of us probably forget to understand कि आपका अगर technical background नहीं है तो you must have to have understanding of the technical jargons. Another very important challenge which I think I face and some of you must be facing as well, that you're not looking the resources or the hunt or the talent at the right place or at the right platform. You're going here and there, but you're not hitting the target. You're not getting the niche because you're not, targeting the right audience, right people to whom you want to hire for. इसके अलावा जो एक और चैलेंज मुझे समझ में आता है, that is too much technology, too much sourcing technology, I believe, which makes you so much confused कि हम किस तरफ जाएं, right? एक प्लेटफॉर्म रखें, एक applicant tracking system रखें, and please build it across and build it with the passage of time as well. And that's what the biggest challenge I face, and I think most of the talent acquisition partners could face or must be facing at the moment as well. इसके अलावा I think मेरे ख्याल में being the head of the department, the most of the common factors which I come across was high salary demands, because इनको retain रखना is very important. और वो आप सिर्फ मेरे ख्याल में एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे नजर में आया है वो है कॉम्पनसेशन. इफ यू नॉट पेइंग मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी, ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट बी एबल टू रिटेन देम. इफ यू वुड नॉट बी एबल टू गिव देम द कैरियर प्रोग्रेशन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको अपने आप को एज अ टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर जो है अब सोचना शुरू करना है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस rely on you, right? And departments rely on you because you are bringing the resource in. So आपको ही इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उनके डेवलपमेंट प्लान क्या होना चाहिए, उनका कैरियर पाथ क्या होना चाहिए, what is their progression in terms of coming years, because you've been involved in their hiring process as well. So this is one of the challenge which any organization in terms of talent acquisition department could come across in the future. Um, एंड आई थिंक ये जो हमारे एक टैलेंट इंडस्ट्री के अंदर अर्ज है ना, टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, ये टू एंड और हमारा थोड़ा सा अगर टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर्स या एचआर का अगर ये पेस थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाए या बैकफुट पे चला जाए, तो यू वुड नॉट बी एबल टू मैप द pace of that technology and the technical resources which want to evolve and which want to learn every single day. तो आपको उनके लिए upskilling programs, उनके लिए आपको boot camps, उनके लिए आपको कुछ mentorship के programs लाना बहुत ज़रूरी होंगे, because
that's how you would be able to retain them. That's what the biggest challenge at the moment in the tech industry as well. So that's, I think, 7 8 which I counted at the moment, which was coming in my head, on top of my head. I just tried to explain to you. I think I tried to cover most of them. You certainly did. अच्छा, I believe उसमें से एक challenge ये भी है कि talent acquisition partners, when you're hiring, उनमें sometimes you're not looking for some like a good cultural fit, और आप hire करते हैं for a good like somebody who's technically sound. What are your comments here? वंडरफुल आइडिया. अच्छा, इसमें ना मल्टीपल मल्टीपल चेक्स होते हैं. एक चीज तो ये कि जब भी कोई टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर स्क्रीनिंग कॉल करे, तो उसके दरमियान कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ चीजें इंस्टिंक्ट होती हैं. मैं समझती हूँ जो टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनकी जो सिक्स सेंस होनी चाहिए ना, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए. और अगर वो नहीं है तो दे कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग कॉल एनालाइज कर लेते हो कि ये बंदा हमारे कल्चरली फिट होगा या नहीं. अच्छा, आप वहां पर भी नहीं कर सके स्क्रूटनी उस चीज की, इट्स ओके, दैट्स ऑलराइट. टेक्निकल इंटरव्यूज में टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर कोशिश करे कि वो बैठे और कोशिश करे कि वो उसको एचआर पर्सपेक्टिव से एनालाइज करे कि कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, क्या वो हमारे कल्चर के साथ फिट इन हो सकेगा या नहीं. मैं आपको छोटे से एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ. हमने एक वी जस्ट हैड एन इंटरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लीड. अब उसमें हुआ क्या, जब स्क्रीनिंग कॉल हुई तो स्क्रीनिंग कॉल वेंट वेरी वेल, इट वाज ऑल ओके, गुड 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 था सब कुछ. ही वाज वंडरफुल स्पीकर, शी वाज गुड कम्युनिकेटर एज वेल, शी हैज गुड एक्सपीरियंस आल्सो इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल. जब हमने उसका टेक्निकल इंटरव्यू किया एंड माय टेक्निकल टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर सैट डाउन इन द इंटरव्यू ऑनलाइन, it was just a matter of 2 minutes. We have identified that that person is not fit for the culture because she was a rude resource prospect. And आपको अंदाजा हो गया कि ठीक है, टेक्निकली बहुत अच्छी होगी, बट आई थिंक वो जो एक लीडरशिप का बैरियर आएगा, दैट विल ऑलवेज बी देयर. तो हमने वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया. अच्छा, अब कुछ रिसोर्सेज या कैंडिडेट्स को आप टेक्निकल टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर्स अगर उस स्टेज के ऊपर भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते, यू ऑलवेज रन अ पर्सनालिटी असेसमेंट. उस पर्सनालिटी असेसमेंट में आपको 5 डायमेंशंस का जो जनरल फ्रेमवर्क है, यू कैन फाइंड एनीवेयर. पर्सनालिटी असेसमेंट करने का फायदा क्या होगा कि आपको उस रिसोर्स के पर्सनालिटी का अंदाजा होगा कि आप, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस रादर आईक्यू नाउ एनीवे. सो द पॉइंट इज कि ये कुछ मल्टीपल चेक्स हैं विच विल इंश्योर दैट आप हर फनल, हर कैटलिस्ट के ऊपर जाके उस रिसोर्स को फिल्टर आउट कर रहे होते हो. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि द पर्सनालिटी which you are looking for and this person who has given the personality assessment has a confusion, फिर उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू रखें और वो ऑन साइट रखें. ऑन साइट जब कोई रिसोर्स आता है ना, प्रोस्पेक्ट आता है, तो बहुत सारी ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर देती हैं कि दिस रिसोर्स कुड बी अ गुड कल्चरली फिट और नॉट. सब कुछ अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको ट्रस्ट में अंदाजा नहीं होगा कि वो बंदा किस तरह का रिसोर्स है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुड फिट होगा या नहीं. Meet the resource once before hiring in person on site, because that gives you a lot of alarming situations, that gives you a lot of good vibes to that prospect that either he's a good fit or not. So these could be multiple checks which must be in your process of hiring, before hiring the resource, and that gives you a lot of checks on that HR perspective, that the person is good fit or not. Okay. Said somebody is raising their hand. I think they have a question. Are we taking questions right now? या हम लोग end पे ले लें? मरियम, आई थिंक वी हैव 30 मिनट्स लेफ्ट, तो 25 मिनट्स में हम जो है ना वो सवाल जवाब पे चल सकते हैं. तो इट्स गुड अगर ये सवाल कर लें तो 30 मिनट्स का सेशन अगर हम इसी का कर लें तो बेहतर है. लेट पीपल आस्क. हम लोग, हाँ, आई वांट टू रैप अप विद वन मोर क्वेश्चन, लेकिन अच्छा चले हम लोग साथ साथ इनको क्वेश्चंस को ले लेते हैं. जी जी जी, who is this? Sobia, you can unmute your mic and ask the question, please. Assalamu alaikum everyone. वाली एक्चुअली माय क्वेश्चन इज, जिस तरह अभी हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं और कल्चरल फिट की बात कर रहे हैं, माय क्वेश्चन ओवर हियर इज कि समटाइम्स ये होता है कि हम स्क्रूटनिंग कर लेते हैं इंट्रो कॉल में, देन वी डू द स्क्रूटिंग इन द फाइनल एचआर कॉल, बट what I faced recently, the candidate was very good, even having 4 to 5 years of experience, but when we took him on board, after getting 1 month salary, he just disappeared.
So like my question over here is like हम scrutiny तो कर लेते हैं हर चीज में, लेकिन व्हाट इफ कि उस टाइम पे हर चीज बहुत अच्छे तरीके से वेंट आउट होती है, चली जाती है, हम कैंडिडेट को हायर भी कर लेते हैं फॉर द जूनियर और सीनियर पोजीशन, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन उनके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे एचआर का रोल किस तरह से ज्यादा बेटर हो सकता है? आई होप आई हैव कन्वेड माय मैसेज. You conveyed very well as it sounded like I am asking this question because I've been suffered from this pain. Trust me, Sobia. Acha, I think that's a every very recruiter has. Unfortunately, yes. not about the recruiter, Sobia. It's not about the talent acquisition. Trust me, it is happening in every single organization. You're taking, I mean, whatsoever you're taking a big name or a short name in the organizations. The only way which how I dealt with it is through the proper culture checks and the HR meetups. अगर आप उस resource के साथ properly, I'm not sure that how frequently you could do that, but in my organization I do it every month. So every month हमारा एक HR meetup होता है and culture check होता है उस resource के साथ just to get that vibe, where is it standing, what is it thinking about. We need to frequently check the LinkedIn profiles of the resources as well, जहाँ पर कहीं पर ऐसा तो नहीं कि वो freelancer का काम कर रहे हों, कहीं पर ऐसा तो नहीं जहाँ उन्होंने open to work लगाया हो remotely. So I'm very vigilant on those areas and I try to grab it from there that something is fishy going on. So, and then the third thing is कि आपकी जो reference checks हैं that are very important before hiring the resource. Reference check का एक process आपको उस resource को ये बताता है कि there is something which could be re-verified if I do some hanky panky. But still people do that. You can't do anything about it. You have a contract, you have a policy that if you want to leave in the organization, within the probation, you have to serve 15 days of notice period or otherwise your salary will be gone. अब इस सूरत हाल में जो आप बता रहे हो, मैंने आपको बताया, you must do culture checks with them. You ensure that your onboarding process has to be up to the mark and next level, world class onboarding process has to be there. Reference checks has to be there, and then the final interview will tell you. I'm not sure who is doing your final interviews, but the final interviews has to be done from the senior resources who've been into the industry, who have the knowledge, who have those instinct of chati has to be well developed, which can gauge the resource that either he could be a good fit or he could be retained with the organization for a longer period of time or So not. what sort of cultural check we can see while interviewing or thinking after having a candidate on board? अच्छा, जब आप ऑनर करोगे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो आपके कुछ पैरामीटर्स जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि आपने उसको ऑन साइट लेकर आना है, उनसे बातचीत करनी है, पता लगाना है। अगर तो आपको आपको लग रहा है कि उसकी प्रोफाइल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ स्विचेस हैपनिंग, सो दैट मींस वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी 1 महीना 2 महीना 3 महीने मैक्सिमम साल 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। सो ऑलवेज आइडेंटिफाई दो जॉब हॉपर्स in advance. और अगर आपको लगता है कि ये बंदा इसकी जो प्रोफाइल है दैट इज क्वाइट चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट मी दैट वुड be a suitable candidate for you. 2 साल 3 साल तक काम कर गया, so that means that the person would stay with your organization if in case depending upon your onboarding process, how you welcome the resource, how you ensure that his everything is intact and he has that vision been delivered to him at the time of hiring, so then that he could stay with you. um, in my personal opinion, I think that आपका जो हायरिंग प्रोसेस है ना, that has to be very strong and that has to be through certain parameters and certain criterias, जिसको फुलफिल करता हुआ अगर कोई रिसोर्स निकल आता है फाइनल इंटरव्यू के बाद भी, then he could be a good resource for you. तो कुछ चेक्स करने चाहिए आपको and that checks has to be there. Otherwise अगर आप सिर्फ उनका इंटरव्यू करके ऑनलाइन और आप उनको ऑफर लेटर दे दोगे, trust me that would not help you out. Great, thank you so much. Okay. You're welcome, Sobia. SNM, you can ask the question. Smart मरियम, seller. I would suggest के रैपिड जो है ना, वो रैपिड क्वेश्चंस और साथ में आंसर्स जो है ना, लेट्स मेक इट लाइक 2 minutes फॉर ईच पार्टिसिपेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मुस्तफीद भी हो सकें इससे। VFSNM, Okay. over to you. Assalamu alaikum. My name is Shabano. That's my initials. I hope you guys are doing well. So my question to you is that as a recruiter, I started off my career as a recruiter, worked with different mandates from C level to different, and right now I'm currently associated with a tech company.
I'm doing a lot of technical recruitment that includes very niche, streams such as DevOps, cloud engineers. So my question is that right now we in Pakistan and globally, we're going through a very different scenario economically. So that has really impacted the way businesses are operating. So in these conditions, where the tech talent is in demand, but then the businesses are also facing certain crunches. So in these and in this challenge, so my question in part A is how can we utilize better retention in terms of these challenging times? And part B is that the rela- any tech talent related to cloud is very limited in the country. What how can we better as recruiters channelize and utilize our sources to build a healthy streamline for these positions? Okay. Thank you very much, Shabana. That's a wonderful question. The answer to your question, part A, is that. Sorry, what was your question, part A? Well, with the business facing challenges economically, so there is a lot of like in terms of retention strategy. Yeah, What can one adopt yeah. for in terms of compensation? ठीक है अच्छा एक चीज़ हमें ये माइंड में रखने की ज़रूरत है हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही किया हुआ है कि वो लोग जो आप समझते हो दैट कुड बी अ रिटेंशन इशू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखिए सिर्फ एक बात याद रखिएगा शर्बानो कोई भी रिसोर्स आपके पास सिर्फ सैलरी की बेस पर नहीं रुकेगा चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो यू मस्ट हैव मैंने भी जैसे बात की दैट यू मस्ट हैव देयर कैरियर प्रोग्रेशन पाथ्स यू मस्ट हैव एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग having those one-to-one meetings with them okay for example if somebody is associate software engineer today and he has to be a software engineer senior software engineer principal software engineer level uska time span kitna hai usko kitne arse mein point A से point B में जाना है अब उस point A से point B में जाने के लिए सिर्फ experience doesn't matter right you need to develop and upskill your skills as well अब उसको स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए यू मस्ट हैव वन ऑप्शन देन दैट इज आप रिसोर्सेज को इतना ऑप्शन दो इतना बेनिफिट दो कि वो अपने लिए अपने आप को अपस्किल अपग्रेड करने के लिए कुछ कोर्सेज करें उन कोर्सेज को करने के लिए यू मस्ट हैव दैट पॉलिसी दैट इट विल बी रीइंबर्स्ड there are multiple sources available they're not expensive udemy hai coursera hai other resources are there platforms are there by which those technical resources can pick those courses they can do it for example if somebody is in python or django they can do that course in initial course from there and you can it's hardly for about $8 $9 $10 and organization have a must have a policy to reimburse that number one so what is that option that policy that benefit is giving the image or that reflection to the candidate or the resource that you do take care about the learning of the resource as well number one number two बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब चूंकि ये एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है टू पे द रिसोर्सेज इन डॉलर्स right so technical resources always look for dollars model of payment बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है बिकॉज रेमिटेंसेस का इशू होता है और इस तरह का इशू होता है बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू पे द रिसोर्सेज इन डॉलर्स दैट इज अनदर रिटेंशन स्ट्रैटेजी which could help you in that particular aspect and trust me compensation is not the only thing which can hold back the resources the another thing which is very important is to upskill them and to show them the career path would help you to retain the resource for a longer period of time now your question number two is that of course the demand is high market is saturated cloud के लोग available नहीं है तो क्या करें the best option, the best way which I could recommend you is, in my humble opinion, to open the channels of remote working as well, and that is how you can able to attract talent from across the borders also, right? You can reach out to those people through LinkedIn as well who are looking for jobs in cloud remotely. Find them, and trust me, the sales navigation option in LinkedIn could help you out in that to find the resources on across the borders also by which you can offer them the remote job paying them through the dollar structure
and because it's a world of remote and hybrid world anyway, right? And if you're not able to find the resources in house, you have to search and fetch from outside the world as well, outside of your country as well. And to offer them the remote opportunities, you have nothing else you can do, right? But if you are finding the right talent across the borders, give them the opportunity and take the work from them and pay them in dollars as well. That's another option I can guide you on. Thank you so much. This has been You're helpful. welcome. Thank you. You're welcome. Usman server, I believe. Before we take another question, I would just like to say कि आप लोग kindly एक तो keep your questions really crisp and concise. Also, when you are done asking the question, kindly अपने आप को mute कर लीजिए. Usman, you can ask the question, please. Okay, thank you so much for giving me an opportunity. So my question is that previously you have discussed about the employer branding, how much it's important. So previously I've worked with a US based company and currently I'm working with a US based company. So जो UK based company थी वहाँ पे भी हमने जो है employer branding पे काम किया है, यहाँ पे भी जो है वो employer branding पे. So basically the mindset of the employer is that अगर हम LinkedIn के strong resources लेके आ रहे हैं, like they have connections about 10,000 or 15,000, so they have to work on our behalf. हमें कुछ नहीं देना है उनको, हमें मार्केट में कुछ भी अपना पॉजिटिव इमेज नहीं शो करना. सो हाउ कैन वी हमें उसको कैसे जो है ना उनको प्रिसाइज करना चाहिए, हमें उनको कैसे जो है ना एंगेज करना चाहिए और किस तरह से उनको मनाना चाहिए that there is a responsibility from your side as well to show something, to show your positivity, to show your uh, like some positive things as well from your side should be came into the market कि आप भी कुछ हैं, सिर्फ आपका रिक्रूटर जो 10,000 या 15,000 के connections लेके बैठा हुआ है, he is not the only thing. That's my question. अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक यू, आपको ये बात यू अंडरस्टूड दैट फैक्ट एज वेल दैट इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट द HR डिपार्टमेंट और टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट टू बिल्ड द ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो काम आपका स्कोप का नहीं है, ऑफ कोर्स यू कांट डू दैट. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव एंड डिजाइन या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है तो इट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट इट एट योर हेड लेवल, एट C लेवल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल, दैट यू मस्ट हैव देम. These are the people who will build the brand of your organization. आप अगर आप, for example, if I'm the organization, I'm the employee of the organization and I'm working in the HR and I have 20,000 people in the LinkedIn, that will not serve the purpose. वो शायद मुझे as a recruiter या as a talent acquisition partner as an individual capacity में तो ज़रूर जानते होंगे, but I don't think so कि वो आपकी organization को उतना अच्छा जानते होंगे. तो it's always important to recommend them to show the culture of the organization through different videos. अच्छा, डिफरेंट वीडियोस हो गई, डिफरेंट कैंपेन्स हो गई, डिफरेंट पोस्ट्स हो गई, आप कोई इवेंट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्लीज गेट देम थ्रू ऑन द सोशल मीडिया. आप अगर कोई किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करें, प्लीज गेट देम थ्रू ऑन द सोशल मीडिया. आप अपना पार्ट इस तरह प्ले कर रहे हैं कि आप जो भी इवेंट कर रहे हैं उसको कैप्चर करें, उसकी एक रील बनाएं एंड सेंड इट टू दोज पार्टनर्स एज टैलेंट एक्विजिशन, आई मीन स्टेक होल्डर्स विच आर मार्केटिंग पीपल, to show that thing what is happening in your organization to the social media as well. आप अपना रोल इस तरह प्ले करेंगे and that is how you can always bring those stakeholders on board that that this is important, that whatever we are doing in house we have to show to the world as well. Because I always believe that projection of the things are very important. Without the projection, if whatever you're doing in house would not make any sense until unless it has been displayed to the outer world as well, and they would not be able to see your culture, they would not be able to see what is happening inside your organization. And of course, you are not the only person who is responsible for that. There are other stakeholders who are in the organization, and that's what the marketing job is. And I think to make them understand would not be that difficult for you or for your head of the department, whosoever is working in your organization, to sit down with them and to talk to them on those things, that look, these organizations are doing this through their marketing department, and I think that's what the trend we have to follow as well. Yeah, good. Thank you so much. You're welcome, Usman. Vakas Durez, you can ask your question, please. All right. Thank you, Mariyam. Good evening, Kanwal.
Okay, Good evening. so Kamal, we discussed about talent acquisition on the flip side, employer branding as well. But there's another aspect as well, जो hiring manager के साथ candidate का experience हो रहा होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही होता होगा शायद बुरा, लेकिन let's say if that experience is off-putting, तो उसको हम इस चीज को like mitigate कैसे कर सकते हैं? Because I have seen people hiring manager technically they are very sound, बट दे डू नॉट नो हाउ टू एंगेज अ कैंडिडेट. जो जेंजीज हमारे पास आ रहे हैं, मिलेनियल्स आ रहे हैं, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ड्यूरिंग द Wonderful. इंटरव्यू टेक्निकलिटीज गेज की जा रही होती हैं, बट हम उनको वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर पाते. एचआर अपना काम कर रहा है, बट वो एक एक्सपीरियंस बहुत बुरा एक्सपीरियंस गुजरता है. कैंडिडेट डजंट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, सो वी लूज द कैंडिडेट, वी लूज द प्रोस्पेक्ट. सो इस चीज़ों को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं? थैंक यू. यू वेलकम. आपसे मेरा एक सवाल है, आप ये मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये आप उस लेवल पूछ रहे हो जहाँ पे एक रिसोर्स हायर होता है या हायर हो जाता है उसके बाद? Hiring process में, let's during the process if we lose the candidate, lose the prospect. अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गाइड करो कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज टेकिंग टेक्निकल इंटरव्यू, तो उस प्रोसेस के ऊपर कोई रिसोर्स कैसे इस वजह से छोड़ के जा सकता है कि वो ही हैज एन इशू विद द हायरिंग मैनेजर? Okay, let's say experience, I'm just talking about the experience कि let's say उसका experience अच्छा नहीं गया उस interviewer के साथ, उस candidate का, ठीक है? गॉट इट. Because they are not very equipped with interview strategies, interview skills उनमें नहीं होती, technicalities का they do know, but the interview skills होती हैं, उस perspective में पूछ रहा ग्रेट, ग्रेट, गॉट इट. अच्छा, इसमें सबसे पहले एक जो मैंने आपको एक इसमें स्ट्रैटेजी बताई कि जब भी टेक्निकल इंटरव्यूज हो रहा हो तो कोशिश करें कि टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान जो टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर्स हैं दे मस्ट अकम्पनी देम. जो इंटरव्यू की ओपनिंग है और जो इंटरव्यू की क्लोजिंग है दैट हैज टू बी थ्रू द टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर्स, राइट? अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू 1 घंटे का होता है, वो टेक्निकल जो हायरिंग मैनेजर है वो भी इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है, जो रिसोर्स इंटरव्यू दे रहा है वो भी इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि बस अब खत्म हो ये चीज़. इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि जब आप स्टार्ट लेते हो इंटरव्यू तो यू जस्ट वेलकम द रिसोर्स, द कैंडिडेट, एंड देन यू से थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच फॉर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एक तो ये ओपनिंग सेंटेंस हो गई. जब क्लोजिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपका काम है कि आप ये उसको बताएं कि इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, विल डेफिनेटली गेट बैक टू. ये बात खत्म हो गई. अब जो टेक्निकल इंटरव्यू का बीच का पीरियड है ना, उसके लिए वो जो एवेलुएशन आपके पास आती है ना, वो एवेलुएशन एक तो आपको बताएगी कि उस रिसोर्स को या उस कैंडिडेट को जिसमें आपने भी विटनेस किया उसको किस तरह एवेलुएट किया गया. एक तो ये चीज़, उसके लिए आपको 1 to 1 मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है. अब हमारे अक्सर जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं या वीपी इंजीनियरिंग होते हैं वो शायद अपने उस एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ हद तक quite civilized होते हैं, but they know how to be courteous and how to be, ask, even if they want to ask technical question, there has to be a norm for that. लेकिन अगर कुछ लोग नहीं होते तो I think the only responsibility of the talent acquisition partners are to not develop the junior resources but to those hiring managers as well, and to build that awareness in them that what is going wrong in the technical interviews and why the people are not joining because they haven't had a good experience with the technical interview, where the engineering managers have to improve as well. And it's not, it doesn't need to be a hard talk, it just could be a awareness session or development session for them as well across the board as well. All right, thank you, Kamal. You are. I think the dilemma of every talent acquisition partner is that our job is like solely लोगों को hire करना या to make sure screen करना नहीं है. It's also to sort of facilitate the resources and the hiring managers throughout the process of talent acquisition. And उसमें sometimes we have to be the bad cops as well. और अगर हमारे end से organization के end से we're not delivering a good response, a good experience, we're not giving the resource a good experience, I think we need to sit down together with each other and sort this out. Because at the end of the day, आपकी organization का whatever image you're putting out, उसी के base के ऊपर you're gonna get resources. Absolutely. Saad, you can ask your question, please. Assalamu alaikum everyone. My name is Malik. Mohammed, and my question is about that how do we assess the personality test of the candidate? As you know, there are so many candidates who have different personalities like introvert and extrovert. How do we test this?
Okay, there are certain tests available online as well. You can pick them from. I can share with Said with you as well. What I'm practicing in my organization, it's a questionnaire. It's a thick questionnaire which a resource the candidate has to fill. उस questionnaire के filling के base के ऊपर कुछ criteria हैं. There's a answering key which you have. उसके लिए आपको कोई psychologist होने की ज़रूरत नहीं है. That's there and you can pick those scores from there and you can accumulate them and you can get the answers from there and then. And the only trick here is from translating those scores to your writing is what matters. So there are multiple platforms available. I can share with Saeed one of that which I'm practicing in my organization. You can use it and there's a key for that as well and you just accumulate the results from there too. Thank you, ma'am. You're welcome. Do we have any more questions? Yeah, I think Ramesh Alam asking a question. Oh, there are multiple जी questions. रमीश जी बताइए रमीश you can ask your question. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि अभी जो टेक्निकल मतलब टैलेंट एक्विजिशन के जो मतलब रिक्रूटर्स हैं एक तरीके से, तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में बेसिकली जो आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये पूछते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं ना हर कैंडिडेट से, व्हाई आर वी इंटेरोगेटिंग, वी हैव टू कम्युनिकेट विद द कैंडिडेट, बिकॉज इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग यू आर नॉट कन्वेइंग द मैसेज और यू आर नॉट गेटिंग देयर पॉइंट। हर किसी का अपना तरीका होता है सवाल करने का, सवाल पूछने का, और यहाँ पे जो मैंने जो पर्सनली अपना देखा है एक तरीके से, तो यहाँ पे जो है वो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सनल लिया जाता है हर चीज़ को ना, और इंटेरोगेट किया जाता है, स्पेशली काफ़ी जगहों पे जहाँ पे मैं गया हूँ। और दूसरी बात ये है कि डू वी हैव टू लाइक have the knowledge about the technical side as well, because if we are technical recruiting, we don't know about the knowledge of some software engineer, because they are like doing their work. We don't know what is .NET developer doing, what we don't know what is SQ doing, and how do we like educate ourselves in these times, because we have to have these resources. So finally gave me some pointers to develop myself as well, and I hope you understand my questions. Yes, yes, I try to. अच्छा, इसमें इसमें बहुत एक सिर्फ एक चीज आपको बताऊंगी इसके लिए। देखिए, आप बेशक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, इट्स ओके रमीश, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरी सर्टिफिकेशन में मैंने एक जुमला बोला था, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड आई आस्क्ड दैट डू यू थिंक दैट एनीबडी कैन बी अ टेक गीक? And the answer was yeah, maybe. And my answer is yes, anyone can be. इसके लिए आपको कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, आपको हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। यू जस्ट सर्च इट आउट नाउ, वर्डप्रेस, यू कैन गेट मल्टीपल paragraphs on that. If you want to search what is Python Django, you can search it out from there. If you want to know what is manual, what is the difference between manual testing and automation testing, you can get the details from there. आपने उस नॉलेज को एक्वायर करना है एंड दैट हैज टू बी डन बाय यू, नोबडी एल्स कैन डू दैट। अगर आपके पास टेक्निकल जार्गन्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग के टाइम के ऊपर आप उससे वो सवाल नहीं कर सकोगे और वो ऐसा ही लगेगा कि वो आप शायद इंटेरोगेशन कर रहे हो, बट देन हाफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आपको स्क्रीनिंग इसके ऊपर ही जज करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ द टेक्निकल इंजीनियरिंग मैनेजर्स एज वेल। अगर वो बंदा उस काबिल नहीं है कि वो आगे प्रोसीड कर सके इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन, तो फिर आपको वहाँ पर स्क्रीनिंग करने के बाद उसको वहीं पर होल्ड कर देना चाहिए। अगर आप समझते हो कि उसमें बेसिक टेक्निकल नॉलेज आपके पास है और आपने वो सवाल उससे पूछे हैं और उसको आते हैं, then you would be able to follow with the technical interview. आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इंटेरोगेशन के मोड में पूछना is your way of style to ask the questions. You always start with a courteous note, you end on the courteous note, and in between you ask in a very casual or in a very non-casual, yeah, informal way, few questions which you would like to ask. So, and how you would do that, of course, जो मुझे आपके सवाल से समझ आया, दैट इज दैट यू मस्ट गेट द टेक्निकल नॉलेज। उसके लिए बहुत डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स अ मस्ट। Okay. Thank you for your questions. I can see that a lot of people have questions. अब उसमें हम ये कर सकते हैं, since we are running short on time,
कि हम लोग आपको मिस कंवल से कनेक्ट कर दें ओवर लिंक्डइन. यू कैन रीच आउट टू हर एंड आस्क योर क्वेश्चंस. Saeed wanted to मैं आपको I'll go over to you. आप कुछ ending notes वगैरह में if you want to discuss something please do ताकि हम लोग इसको wrap up कर सकें. Thank you so much. Mariam. Thank you. You moderated the session very well, and I would like to thank our speaker, ma'am. Kanwal, वही energy first second से लेके last second तक. Thank you, ma'am, for being available Thank all you the very time. much, Saeed. It was lovely talking to everyone. I hope we had more time to take care of all the questions we had from the people. But of course, I'm always available on LinkedIn. You can give my number to them. It's Yes. always good to help people and to give awareness to the people. So I'm always there for your help as well. So by the way, Saeed, मुझे personality assessment का please याद करा दीजिएगा. I'm going to share that जरूर tool मैम. with people so everybody can use it. जरूर. Thank you so much, ma'am. I would like to share few things before ending the session. जितने भी हमारे participants हैं जो अभी hand raise कर रहे हैं, I have a tip for you people के confidence is the key, to avail the opportunity. जब भी कोई session आप अटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का सेशन था, उसमें शुरू में आप हाथ खड़ा करें तो जितनी जल्दी आप सवाल कर लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा है. बट अभी हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि आपको हम कनेक्ट कर दें विद अवर स्पीकर. मैम कंवल के साथ हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन, थ्रू व्हाट्सएप. आप वहाँ पे जो भी आपकी क्यूरी है आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, एंड आई होप कि यू विल गेट द आंसर. बाकी जो लोग सेशन लेट जिन्होंने ज्वाइन किया और या ज्वाइन नहीं कर सके इंटरनेट की वजह से, उनके लिए ये है कि आज रात तक इंशाल्लाह ये जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पर हम अपलोड कर देंगे. और जो चैनल का जो लिंक है या जो वीडियो का जो लिंक है वो जितने भी ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप के जहाँ पे भी अगर हमारा मैसेज ड्रॉप होता है तो वहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर देंगे. जिन लोगों ने ईमेल के थ्रू अप्लाई किया था दे कैन गेट द सेशन लिंक थ्रू ईमेल. आपको वहाँ पे एक ईमेल आ जाएगी जिसमें ये वीडियो लिंक वहाँ पे गिवन होगा. अच्छा, एक तो ये यूट्यूब के बारे में आपको बताना था. सेकंड ये है कि आपने जो हमारा एक लिंक होता है जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें आपने अप्लाई करने के लिए वंस आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया, आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सेम वही लिंक तमाम सेशंस के लिए यूज हो रहा है. आपने एक दफ़ा अगर जो हमारा फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म उस पर ट्रेनिंग्स बाय HRPN के नाम से जो फॉर्म है एक दफ़ा आपने फिल कर लिया, दैट्स इनफ. आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है किसी भी सेशन के लिए, आपको ईमेल आती रहेगी. उसके अलावा मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जस्ट अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा. इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, it is, Saeed. चले जी. हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है HRPN इज ऑल अबाउट नॉलेज शेयरिंग. जॉब्स तो बहुत कम शेयर करते हैं हम नॉर्मली, वो भी सिर्फ HR कैरियर से मुतलिक जॉब्स है वही हम शेयर करते हैं. उसके अलावा कोई भी कंटेंट वहाँ पे शेयर करना अलाउड नहीं है. तो डेली बेसिस पे कोई डिफरेंट किस्म के गाइडलाइंस, पॉलिसीज, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स हम ग्रुप्स में शेयर करते हैं. आप ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हैं. उसके अलावा दिस इज आवर ऑफिशियल पेज ऑन लिंक्डइन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे डेली बेसिस पे जो हम डिफरेंट कंटेंट यहाँ पे आपको क्वालिटी जो है ना HR कंटेंट दुनिया भर से जहाँ से भी हमें कंटेंट मिलता है, वी डू शेयर द कंटेंट ऑन पेज. यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज, गाइडलाइंस, उसके अलावा मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. आप पेज को फॉलो कर सकते हैं. उसके अलावा ये था कि आज का जो सेशन था दैट वाज ऑल अबाउट टेक्निकल टैलेंट एक्विजिशन, और HRPN के प्लेटफॉर्म से हम एक सर्टिफिकेशन जो है ना वो करवा रहे हैं टेक्निकल टैलेंट एक्विजिशन पे, जो कि 18 तारीख से हमारा जो सेकंड बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट. आप में से किसी को भी अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि ये तकरीबन 10 आवर्स का सेशन है जिसमें 2 घंटे का एक सेशन होगा. टोटल हमारे 5 सेशंस होते हैं. मैम कंवल जो है इस तमाम सेशन को, इस तमाम ट्रेनिंग को एज अ फैसिलिटेटर जो है ना वो लीड कर रही हैं. हमारा जो फर्स्ट बैच था दैट वेंट वेरी अमेजिंग, बहुत ही कमाल का रहा. एंड वी हैव मोर देन 25 to 30 से भी ज़्यादा के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ट्रेनिंग के, जिसमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम A से लेकर Z तक जो है वो टेक्निकल टैलेंट एक्विजिशन का A से Z तक हम इसको कवर करें. वी स्टार्टेड विद द नेम ऑफ टेक्निकल टैलेंट, टेक्निकल रिक्रूटर के नाम से हमने स्टार्ट किया, बट विद द सजेशन ऑफ अवर facilitator we are trying to go with the technical talent acquisition partner or professional this time. So you will have a good experience. You can become part of the training program. बात ये है कि we have lifetime mentorship for you people. During the training program एंड पे आपने 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो जमा करवाने होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं वो जमा करवानी है, साथ में आपने एक प्रेजेंटेशन जो आपने देनी होती है.
इससे मुतालिक जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन नोट डाउन आवर ऑफिशियल नंबर, आप अपने पास नोट कर सकते हैं अभी, और आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको ये जो मैम ने अभी कंटेंट का कहा था वो अगर आपको चाहिए तो उस बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी जो सर्टिफिकेशन है इससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर प्लीज आप सेव कर लीजिएगा, इट इज 030300500018। मैं रिपीट कर रहा हूँ 030300500018, 030-300-518। माय नेम इज सईद अली गोहर, मेरे नाम से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल नंबर ऑफ HRPN। सो थैंक यू एवरीबॉडी। बाकी ये है कि हमारे फ्री सेशंस में नेक्स्ट एक सेशन लाइन में है, नेक्स्ट वीकेंड वी आर कमिंग अप विद लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर HR प्रोफेशनल्स, जो कि फ्री सेशन है, आप उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट वीकेंड को। और उससे नेक्स्ट वीकेंड को जो हमारा है वो है CV राइटिंग फॉर HR प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट वीक जो है वो आपके प्रोफाइल्स पे हम बात करेंगे कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट जो सेशन होगा इस मंथ में वो होगा CV राइटिंग के ऊपर, हम बात करेंगे कि HR प्रोफेशनल्स अपने CV पे कैसे काम कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, स्पेशली मैम कंवल फॉर योर टाइम वंस अगेन, एंड मरियम, Zahid, thank you for moderating the session.